दोस्तों, मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मेरा हिंदी बहुत अच्छा नहीं है और आज जो मुझे रखना है उसमें थोड़ा कुछ गलती हो जाता है तो बहुत बड़ा गलती हो जाता है। इस वजह से मैं इंग्लिश में बोलूँगा और बीच बीच में हिंदी में भी बोलूँगा। I'm also very grateful to all of you for setting the tone of this discussion so well. You really set the tone so well by talking about the great revolutionary from this land, Dhanvantri ji, and talking about the need, the desperate need for peace and harmony. You've already set the tone. I have to maybe talk about the context in which we have to look at love and peace today. Because the context of love, the context of peace, the context of war keeps changing historically. जब गांधी जी इस बात बोल रहे थे और उससे पहले कबीर इस बात बोल रहे थे, उस वक्त का जो कॉन्टेक्स्ट है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, और आज के जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें बहुत फर्क है। कबीर जी जब ये बोल रहे थे, मैं बार बार इसको दोहराता रहता हूँ, कबीर जी बुनकर भी थे और संत भी थे। उनके बोली और काम उसमें ताने बाने बिल्कुल था पूरा। मैं कर्नाटक से आ रहा हूँ और कर्नाटक में इसी चीज के बारे में बसवण्णा और द ग्रेट रेवोल्यूशनरीज ऑफ 12th century, they actually made a whole philosophical issue of labor. कन्नड़ में इसको कहा जाता है कायक वे कैलास, कायक ही कैलाश है। कायक मतलब लेबर, hand labor, hand making. And this is what we find, in fact, in all the saints of the world, especially the saints who come from the Shudra background. It's a very interesting thing. जो संत लोग शूद्र वृत्ति से आए हैं, वो अपने वृत्ति को साथ रखकर सत्य बोलते हैं, उसको कभी उसको तोड़ते नहीं हैं। जो ब्राह्मण या बनिए या क्षत्रिय जात से आते हैं, वो भिक्षाटन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो घमंड जो है वो हटाने के लिए ये भिक्षाटन उनको जरूरत पड़ता है। बुद्ध ने भिक्षाटन किया क्योंकि वो महाराजा था। परमहंस भिक्षाटन किया क्योंकि वो ब्राह्मण थे। Like that, I can talk of so many of those people. Now, both these saints have hit the point very well. तुम ऊपर हो तो तुम्हारा घमंड नीचे कर दो, तुम नीचे से आए हो तो नीचे से आने का मतलब है तुम श्रमजीवी हो और उसको छोड़ना नहीं है। तो श्रमजीवी लोगों को श्रम छोड़ना नहीं है और ऊंचे जात के, ऊंचे विचार के लोगों को ये विचार के घमंड को छोड़ना जरूरी है। आजकल क्या हुआ है, पूरा ये जो मानव सिविलाइजेशन, ह्यूमन सिविलाइजेशन इटसेल्फ, ये यहां फंस गया है, दिमाग में फंस गया है। हम सब के वृत्ति दिमागी वृत्ति हो गया है और ये दिमागी वृत्ति होने में मशीनी टेक्नोलॉजी का इतना बड़ा भाग है, उस वजह से ये ज्यादा हो गया है। मतलब
जितना गांधी जी के समय में था, जितना कबीर के समय में था, उससे बहुत बड़ा घमंड हमारे ऊपर है। ये घमंड हम सब में है। We may pretend that I am very humble. I may be acting humble. I may be showing my humility in every little thing of mine. I may be called Shri, Shri, Shri something, or Mahan, Mahan something, but all of us suffer from the ghamand. Because we actually do very little other than do this. बटन दबाते रहते हैं या तो सोचते रहते हैं। उस वजह से हम सबको ये जरूरी हो गया है कि प्यार की बात कर रहे हैं तो उसमें ये जुड़ जाता है, हमारे घमंड। दूसरा चीज एक ये भी आ गया है हमारे सामने, जो कबीर के जमाने में नहीं था, गांधी जी के जमाने में नहीं था, विवेकानंद के जमाने में भी नहीं, कम था। वो है उस वक्त ये जो प्यार और ये एक ऑल्टरनेटिव था। उस वक्त प्रगति, प्रोग्रेस was the main thrust. गांधी जी भी finally he had to give in to the prime ministership or the leadership of Nehru, because he was not very sure that the peasantry represented by Mr. Patel may not be able to handle it. So those days we were having a choice of you call it spirituality, you call it saintly feelings and all that. But today we don't have that choice. The most important factor of today is that there is no choice for humanity except to deconstruct. Today it is not the vague people who are talking about the human existence, but it is scientists who are talking about human existence, and that too physical scientists. मतलब भौत विज्ञानी कह रहे हैं। जीव विज्ञानी कहते तो ठीक है भैया, वो जीव विज्ञानी है, जीव के बारे में कह रहे हैं, नहीं, भौत विज्ञानी कह रहे हैं। Stephen Hawking has said just before he died that look, I don't think the humanity can survive beyond 100 years at the most. That's what he said, and he died. So actually we have no choice but to deconstruct economically, deconstruct in terms of our intellectual pursuits, and deconstruct in terms of going back to Shram. The moment I say this, everybody says, कैसे होगा ये, हम तो इतना आगे बढ़ गए हैं, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। ये है, इस अनुमान से हम ये हालत बना दिया है हमारे इसको। हम अनुमान पीड़ित है। हम धार्मिक भी है, मगर वो धर्म धैर्य से हुआ धर्म नहीं है, एक कवर्डाइज से हुआ धर्म है। हम सब डर गए हैं, हमें मालूम है, अंदर मालूम है हमें कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, बहुत गड़बड़ होने वाला है। हमारे बच्चों को हम अच्छे ये छोड़ के नहीं जा रहे हैं, बहुत ही गड़बड़ होने वाला है, हमें मालूम है। उस वजह से हम धर्म करते हैं, ज्यादा पैसा दे देते हैं, बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े मस्जिद, बड़े बड़े चर्चेस बनाते हैं और झगड़ते रहते हैं। डरे हुए आदमी झगड़ता है, धैर्य से जो सोचता है वो झगड़ता नहीं है, वो प्यार से बोल सकता है, क्योंकि उनको मालूम है कि मैं जो सब कह रहा हूं सत्य है। आज नहीं सुनेगा तो कल सुनेगा। हमें ये बात इसलिए कह रहा हूं, ये बात मैं यहां खड़े होकर लेफ्ट वाला होकर राइट वालों से नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस वाला होकर बीजेपी से नहीं कह रहा हूं।
इप्टा वाला होकर किसी से नहीं कह रहा हूं, ये सब हम पूरा the humanity has to think of this problem of how to get back our confidence, because confidence is spirituality. You know, Kabir, if he was a great spiritual leader, it was because of the absolute confidence. When somebody told Kabir that, if you are dead elsewhere, you will not go to Swarga, he said, "ठीक है." The man who was in Kashi, who quits Kashi and goes somewhere and dies, that sort of confidence we don't have. I think we should have. And that is the confidence which can bring us back to our Guru Nanak. That is the sort of confidence which can bring us back to our Basavanna, or to our Dhanvantri, or to our Bhagat Singh, or to anybody. इसमें right left का कोई फर्क नहीं है. So ये जो जाथा हम कर रहे हैं, ढाई आकर प्रेम के जाथा, इसका जो ये विस्तार बहुत है. हम सबको सोचना है कि ये जो हमने कर बैठा है, क्या कर बैठा है हमने. There is so much of ease for us, there is so much of comfort for us, and ease, is it everything? Giving up, what does giving up mean? Does giving up mean that you give up 100 rupees when somebody asks? Are we thinking of our lifestyle? Is the lifestyle corresponding with what lifestyle which Jesus Christ subscribed? Or any saint subscribed? So we have to very seriously think, and in this jatha, in a symbolic way, in a silly way, we are trying to bring some of those things back into circulation. Pad yatra kar raha hai. Pad yatra, it is such a silly symbol. But let me tell you, even that silly symbol makes you so nice. You feel so nice about it. If you just ask money from friends like this, it's a silly thing, because you are not really going and begging where a beggar begs. A beggar, when he or she begs, you don't know what sort of terrible humiliation it is. But here, even this begging makes me feel so nice about it. This Padyatra makes me feel so nice about it. And the sort of response we have got in Jammu when we went to these few places of worship, and suddenly realized that these places of worship was not built for jhagda. These places of worship was built with such a beautiful dream. So I don't think there is anything for me to talk. I don't think there is anything for you to learn. We all have to come together to deconstruct. Now deconstruction, or becoming simpler and natural and a little more hardworking, is something which everybody can start in their own way. यहाँ कोई आपको नहीं कह रहा है कि नहीं कल से आप यही करना है, नहीं. Each one can decide, how am I going to become simpler and this thing. So all this is part of this jatha. This jatha is a beginning for many such activities, because I don't think we have more than 100 years to deconstruct. And I don't think we have many days left to stop wars, terrible wars. We can't even talk of Indian situation. You talk of any situation anywhere in the world, everywhere humanity has to become jhagadal. Yes. Everywhere, all over the world. So let us seriously introspect, and I'm really privileged to be talking these few words to you, because I have never experienced a sort of, let me use the left word, camaraderie anywhere in these last 2 months. I'm very grateful to you. Dogri is a small language compared to many other languages, but even when I was in Sahitya Academy, when I used to listen to the Dogri writers and their passion about culture, I used to be amazed.
And I have felt this with almost all writers of all the what we call smaller languages. They are smaller in numerical sense, but in terms of the richness of culture, in terms of the richness of their memories, यादें, इतने यादें हैं छोटे भाषाओं में, छोटे संस्कृतियों में, बड़े संस्कृतियों में कुछ याद नहीं है। इंग्लिश में क्या है यादें? इंग्लिश तो खेले जैसे है, खाओ और चला जाएगा अंदर, आसान है। डोगरी आसान नहीं है, कन्नड़ा आसान नहीं है, तुलु और whatever कोंकणी आसान नहीं है। And these are the languages, these are the people who can lead the world. Let us have that confidence that it's the Dogri people, it's the Kannada people who can lead the world tomorrow and maybe take them to Europe. Thank you very much.